बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सैयद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs रिगार्डिंग टेस्टिंग एंड मेजरमेंट, आल्सो टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। तो इसके इंपॉर्टेंट MCQs हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो लोग FPSC लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है ये वीडियो, और जो लोग BPSC एजुकेटर्स की जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए है ये वीडियो ख़ासकर। तो और जिनका जो है पेपर BS इंग्लिश कर रहे हैं जो लोग, और उनका टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन का है पेपर, या फिर जो लोग MA इंग्लिश कर रहे हैं उनका TESOL का पेपर है, तो उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो ये वीडियो ख़ासकर उन लोगों के लिए बनाई गई है। आपने स्किप नहीं करना, स्टार्ट से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। हमने तकरीबन 70 MCQs इसमें डिस्कस करने हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो होती है वो प्रिपेयर्ड बाय होती है प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट ऑफ कोर्स कंटेंट्स, प्रिपेयरिंग टू वे चार्ट, डेवलपिंग लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑल अबव। ये सारे आइटम्स भी इसी में ही इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज टू। इवैल्यूएशन का पर्पस होता है टू मेक जजमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग। द करेक्ट ऑप्शन इन MCQ इज, MCQs में करेक्ट ऑप्शन जो होता है दैट इज कॉल्ड आंसर्स, और जो रॉन्ग ऑप्शन होते हैं दैट आर कॉल्ड डिस्ट्रैक्टर्स। To assess achievement at the end of instruction is that is called summative assessment, जो कि at the end of the instruction ली जाती है। The score of a student getting 70 correct and 30 incorrect answers in MCQ items having 4 options by applying guessing correction formula will be 60%. अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स आइटम इज दैट इज़ ऑल अबव। इसमें राइट रॉन्ग भी आते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट भी आते हैं, और ट्रू फॉल्स भी आते हैं। द आइटम इन द कॉलम फॉर विच अ मैच इज सॉर्ट is that is premise. The purpose of evaluation is to make judgment about educational quantity, quality, age, time period. Educational quality के बारे में जो judgment होती है that is called purpose of evaluation. The supply type test item is that is called completion items. That test means for prediction on a certain criterion are called aptitude test. The purpose of formative evaluation is, formative evaluation का purpose होता है to monitoring progress of students. The alternative name of the table of specification is, table of specification का alternative name है test blueprint. Limited to quantitative description of pupils' performance is, that is called measurement. In multiple choice item, the stem of the item should be meaningful. The test measures what we intend to measure. This quality of the test is called, that is called validity. ये characteristics of good tests में से होता है। Discrimination value of more than 0.4 means, more than 0.4 होगा it means item is acceptable, and if less than 0.2 होगा that means item is not acceptable, item is difficult. The difference between maximum and minimum values is, that is called range. Instrument used for measuring sample of behavior is, that is called test. Permanent difficulties in learning are इन्वेस्टिगेटेड इन। परमानेंट डिफ़िकल्टीज़ लर्निंग में जो इन्वेस्टिगेट की जाती हैं वो हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं। प्रोसीजर्स यूज टू डिटरमिन पर्सनस एबिलिटीज़ इज, दैट इज़ कॉल्ड मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। द स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट गेटिंग 70 करेक्ट एंड 30 इनकरेक्ट आंसर्स इन ट्रू और फॉल्स आइटम्स बाय अप्लाइंग गेसिंग करेक्शन फार्मूला विल बी 40. Broader in meaning is, that is aims. In a norm reference test, which item is best, whose item difficulty is near 50. Objective type question advantage over essay type because such questions are easy to mark. Objective जो होती है वो easy होती है चेक करने के लिए, that's why ये इसका एडवांटेज है। Which of the following statement is the criterion reference interpretation, that is Achat can state Newton's second law of motion. The statement of problem is MCQs is, that is STEM. The length of our test is an important factor in obtaining a representative sample. In norm reference test, the comparison is between, comparison जो होता है वो individuals के दरमियान होता है. In norm reference test, the comparison is between individuals. Table of specification helps in, table of specification जो होती है वो help करती है in test development. Value that divides the data into two equal parts is, that is median. Frequently used tools of summative evaluation are, that are test. The type of the test by method is, that is objective type test. Evaluation that monitors learning progress is, that is formative evaluation. The incorrect options in MCQ are, that are called distractors. ये थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था. The incorrect options in MCQ are distractors. Running
description of active behavior of a student as observed by the teacher is that is anecdotal record. Identifying relationship between two things is demonstrated by matching items. Vast of all in scope is all in scope vast जिसका होता है that is evaluation और least in scope जो है वो test है. The most widely used format on standardized test in USA is that is multiple choice. The summative evaluation is that is certifying judgment. Which one is not the type of test by purpose? ऐसे type test जो है वो type of test नहीं है by purpose. The most widely applicable test item is that is MCQ. The formula of mean is used. Mean का formula है ये x and hash 772 and ax by n. The right sequence is right sequence की अगर हम बात करें तो that means test, measurement, assessment and evaluation. Summative evaluation is used at the end of the program. Projective techniques are used to measure. ये यूज़ की जाती हैं पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का यूज़ करते हैं. हाउ मैनी कॉलम्स मैचिंग आइटम्स हैव 2 columns. Facility value of less than 0.20 means item is difficult. The purpose of table of specification is means all above to have the teacher for sampling question from all contents, to develop integration between objectives and contents, to develop a balanced test. Tests involving the construction of certain patterns or solving problems in terms of concrete materials are called performance test. The test made to compare the performance of student with the other students is called norm reference, जिसमें हम इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को जो है कंपेयर करते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ. A sum of questions is that is test. And next is the process of obtaining numerical value is that is called measurement. Cudder-Richardson method is used to estimate. ये यूज़ किया गया था to estimate reliability. Which question have increasing objectivity of marking? That is multiple type questions. In which question marking will be more reliable? Multiple choice question में marking जो है वो ज़्यादा reliable होती है. The purpose of the evaluation is to make judgment. A multiple choice question is composed of question or statement referred as STEM. Objective representing the purposes of instruction of a teacher are called instructional objective. The least in scope is that is test. Students' performance is compared with other students is that is norm reference test. The most commonly used guessing correction formula to predict and control is that is S is equal to R minus W by N minus 1. Median of 164,523 is that is 3.5. The type of essay item in which contents are limited is that is restricted response questions. Which questions are difficult to mark with reliability? That is unstructured essays. A test very popular with classroom teacher is that is multiple choice. The main advantage of essay type is that is they can measure complex learning outcomes which cannot be measured with other type of questions. The first step in measurement is that decision of what to measure. I hope it's clear to all of you. इसमें हमने आज की इस वीडियो में 68 to 70 MCQ डिस्कस किए हैं जो कि टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, टेस्टिंग एंड मेजरमेंट से लिए गए हैं और ये लेक्चर के टेस्ट के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है और PPSC एजुकेटर के टेस्ट के लिए भी हेल्पफुल है. तो जो लोग चैनल पर न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.